भी ना छूटे, so that no student will miss anything. Okay, so if you are, if you don't know Hindi, don't worry, whatever I am speaking in Hindi is only just a translation of what I have spoken in English. Okay, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, आप भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी चीज मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ वो मैं हिंदी में रिपीट जरूर करूंगा. ओके ओके, सो आज के सेशन में क्लोज टू 30 मिनट्स to 40 minutes हम लोग डिस्कस करेंगे. So for 30 to 40 minutes we'll discuss about banking examination and banking industry, banking jobs. Okay, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, if you have any kind of query question, you are most welcome to put it on the chat window. आप चैट पर वो क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं. Once I'll finish my session, I'll take a question answer round. एक बार मैं सेशन फिनिश करूंगा तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब, क्वेश्चंस का आंसर्स. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so before getting into a banking examination, banking jobs के लिए जो एग्जाम होते हैं उससे पहले we need to understand what is the how is banking sector in India. Okay, so if you are planning to go for a bank job, you first need to understand, are you getting into right industry, is it a right career choice for you, क्या ये सही career choice है आपके लिए, क्या हो रहा है एग्जैक्टली बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्या अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है. ओके, see basically what we have seen, the demand for career in banking is at the peak, it's the highest right now. Okay, why? See, we have seen it at numerous occasions. बहुत सारे situations में हमने देखा है, जब रिसेशन आया था, demonetization आया, अभी pandemic situation है, all these situations where there is a problem into the economy, one job that's that is unaffected, kind of, you don't have an kind of a problem of losing out to your job, is basically government and banking jobs. Okay, so if you are into a bank, it has to run, whatever the situation of the economy, so you have a safe job in your hand. Okay, that is why banking and government job exams, you may see this year's the notification when they come in, they have started coming in. So SBIP have just launched, IBPS already is underway, SO IBPS SO notification is launched. Okay, SSC CGL is about to come, CHSL is already there. Okay, so what will happen is there'll be more number of aspirants this year because of this particular reason. Okay, now for India, for a country like India, because India is a developing country, इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, सो इकोनॉमी में बैंकिंग की जो एक इम्पोर्टेंस है, इट इज द मोस्ट, बैंकिंग इज काइंड ऑफ अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज money has to flow, money has to go to the different new industries that coming in, new organization that's coming in. Okay, so banking becomes all the more important in context of a developing economy. Okay, banking sector बहुत ज्यादा तेजी से grow कर रहा है. You are probably, आप जहां पर भी हैं, you may have seen the number of branches that a particular bank used to have, it is now doubled and tripled. Number of ATM that used to have, it's now doubled and tripled. Okay, so जहां पर branches नहीं थी, वहां पर भी branches open हो रही हैं. ठीक है, so there are a lot of opportunities, lot of vacancies that's coming up, है ना. And आगे जाके क्या हो रहा है, what is happening is now is that government is promoting private players to come into banking. Okay, that will open the market a little more. Okay, and you have more number of vacancies with very good pay packages that may come in. Okay, so the career opportunities in banking is like very, very good right now. For next 10, 12, 15 years, it's a very good job opportunity market. Okay, plus banking also gives you an advantage of having a very constant growth year on year basis. Okay, so that's because there are so many hierarchical level in banking that you can grow at a very rapid pace if you work good into the banking system. Okay, now just to understand, there are 3 types of banks in India. Okay, one are called commercial banks. Okay, all those banks that you are seeing, probably HDFC Bank, Axis Bank, State Bank of India, these all are commercial banks. Okay, there are 3 categories of commercial bank. One is private sector bank, one is public sector bank, and there are regional banks. Okay, regional rural banks that you may have seen. Okay, now then the second category of banking is called cooperative banking. Okay, where there is a society running that particular bank.
The idea is to give social, to give financial assistance to people who are not getting, that particular, who are not having accesses to, different banking systems. Okay, so there are three kinds of cooperative bank system. One is state cooperative bank system, central cooperative bank system, and primary agriculture credit societies. Okay, then comes investment and specialized bank. So there are certain banks which deals in investment only. Okay, so for example, a company wants to buy out another company, there'll be a bank who is helping into that investment. Okay, there is some kind of a collaboration between a foreign company and an Indian company, then there is an investment bank that take care of that. Then there are certain specialized bank as well. For example, you must have heard Airtel Payments Bank, Paytm Payments Bank. Okay, these are specialized banking systems which are coming. So there is so much into banking industry. If you wanted to make a career, बहुत सारी चीजें हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में, आप बहुत तरह के बैंक्स होते हैं, नए नए तरह के बैंक्स आ रहे हैं अब धीरे धीरे करके, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं वो कंसोलिडेट हो रहे हैं. तो आपने देखा स्टेट बैंक के सारे बैंक अब एक हो गए हैं. ओके, सो नाउ दिस इज लाइक चेंजिंग एट अ फास्ट पेस. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं. Shriram is asking, can you repeat the investment bank? So investment banks are specialized bank which deals into investments of, different entities. किसी एक particular organization को एक particular organization में बहुत सारा money invest करना है, तो there is an investment bank for that. Or some kind of a takeover is happening, some kind of a foreign, आपको foreign जाके कुछ investment कर रहा है आपकी company को बहुत बड़ा, तो उसके लिए there are specialized bank that handle those investments. Okay, or who counsel or who consult, give consulting for those investments. Okay, Sushi, sorry, Shriram, good. Okay, let's go ahead now. Coming down to the banking recruitment. So banking के जो jobs होते हैं, जो recruitment होता है, तो उसमें 3 positions generally, if we say, so there are 3 vacancies जो सबसे popular vacancies हैं जो आती हैं. The first one is a clerical level vacancy. Okay, which is the lowest level at the fresher, जो आप start कर सकते हो. Then comes your probationary officer vacancy, जो basically क्या होता है, आपका एक probation period होता है, तो आप as a PO probationary officer लगते हो, और once probation period will get over, you will be posted like an assistant manager kind of a job. Okay, then comes your specialist officer job, where specialized field में आप banking में काम करते हो, तो IT हो गया, marketing हो गया, agriculture हो गया, कुछ और fields होते हैं. So basically ये specialized vacancies होती हैं. ठीक है, सो 3 तरह से आप बैंकिंग के सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं. ठीक है, अब बैंकिंग इंडस्ट्री जैसे हमने बात करी, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, तो एक तो ये रीजन हो गया बैंकिंग जॉब के लिए जाने के लिए. अदर देन दैट देयर आर सर्टेन अदर बेनिफिट्स दैट यू हैव इफ यू गेट इनटू बैंकिंग एग्जाम. तो बैंकिंग की जॉब अगर आप लेते हो तो देखो आपका हाउसिंग बहुत ही सॉर्टेड रहता है. क्या होता है, या तो बैंक्स के अपने हाउस होते हैं, अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में हो तो कई जगह पे बैंक्स की अपनी हाउसिंग सोसाइटी होती है, तो आपको वहां पे घर मिल जाता है. अदरवाइज बैंक से आप अपना हाउस लेने चाहते हो, बहुत ही लो रेट पे आपको लोन मिल जाता है. रेंटल्स, कई बैंक्स में सिस्टम होता है कि वो रेंटल्स आपको दे देते हैं. ओके, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी कवर्ड होती हैं, लोन्स बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे मिलते हैं. अगर बाहर किसी बंदे को या किसी पर्सन को वो लोन 8%, 9% पे मिल रहा है, आप बैंकिंग एम्प्लॉय हो, आपको 1.5, 1% पे, 2% पे मिल जाएगा, है ना. बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, लीव ट्रेवल अलाउंस होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है, डीएनएस अलाउंस होता है. ठीक है, कंपनसेशन होते हैं, एलटीसी होता है, बहुत सारी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं. you can start with a PO, you can get into chairman तक गए हुए हैं लोग. Okay, so there are examples when somebody who started as a PO or assistant manager have gone till chairman level. Okay, so promotional opportunities बहुत होती हैं. ठीक है, and then at the end of the day it's a very safe job, there is no denying about it. Okay, so that's why there is so much demand, so much kind of everybody wants to get into banking industry, your banking jobs. जस्ट टू गिव यू अ लिटिल पर्सपेक्टिव, किस तरह की सैलरीज होती हैं. काफी स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर सैलरीज किस लेवल पे होंगी. तो देखिए, अगर आप एसबीआई में स्केल 1 ऑफिसर लगते हैं, ओके, सो आपकी जो सैलरी है राउंड अबाउट 8 लाख से 13 लाख के बीच में रहेगी. ठीक है, दैट्स इज पर एनम इंक्लूडिंग एवरीथिंग. ओके, आईबीपीएस ऑफिसर स्केल 1 पे लगते हैं आप, पीओ लेवल पे लगते हैं, तो 5 से लेकर 9 लाख के बीच में आपकी सैलरी रहेगी.
एसबीआई क्लरिकल लेवल पे लगते हैं तो राउंड अबाउट 3 to 4 लाख, और क्लर्क लेवल आईबीपीएस में क्लरिकल लेवल पे लगते हैं तो 2.5 to 3 लाख। ठीक है, सो अराउंड इसके थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट रेंज यही रहती है। ओके, बैंक टू बैंक डिफर करता है, आप मेट्रो सिटी में लग रहे हो, नॉन मेट्रो सिटी में लग रहे हो, तो दैट वेज देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, बट अदरवाइज दैट्स largely is your salary per annum. There is one another banking vacancy which I have not discussed is RBI grade B. Okay, so a grade B officer into RBI. RBI is basically Reserve Bank of India, the apex banking body institution in India. Okay, we are not discussing about RBI grade B because उसका हम अलग से session करते हैं generally. It's a little different and difficult and complex exam than the normal banking exams that are there. So उसके लिए एक अलग से proper पूरा session होता है, तो उसमें हम लोग deal करते हैं। ठीक है, तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हो, करियर लॉन्चर गवर्नमेंट एग्जाम जॉब्स करके यूट्यूब पे, तो वहां पे विल डू आरबीआई ग्रेड बी का अलग से सेशन जिसको आप कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ बैंकिंग करियर? अगर आपको बैंकिंग में करियर बनाना है, सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो मैं देख जाता है मुझे, तो मैं आंसर कर देता हूं, बट डोंट वरी इफ यू हैव पोस्टेड एनी क्वेश्चन, मैं अगर अभी आपको आंसर नहीं दे रहा, आई विल 100% आंसर दैट, और मे बी वन ऑफ माय कलीग who is there into the session, they'll answer on the chat itself. Okay, so उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा, so मैं end of the session वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर कर दूंगा। Okay, now what are the skills required to become a banker? So पहली जो चीज चाहिए आपको, कस्टमर डीलिंग आपको करनी है, तो you should not be very shy, you should be ready to talk to unknown persons. ओके, बिकॉज वही जॉब है एट द एंड ऑफ द डे। बैंकिंग में आपको हर रोज नए से नए अननोन पर्सन से आपको डील करना होगा। ठीक है, you have to have a lot of patience, because generally banking में क्या होता है, 30 to 40% customers comes with some kind of a frustration or some kind of a problem with you. Okay, तो आपको patience बहुत रखना होता है। Then आपका numbers और accounting अच्छा होना चाहिए, because that's what you are dealing, you're dealing with cash numbers day in day out. Okay, and your analytical skills has to be good. आपकी analytical skills अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे approvals आपको देने होंगे, loans का approval होगा, different other schemes का, insurance scheme का सबका approval होगा, so आपके वो analytical skills अच्छी होनी चाहिए। कौन कौन से बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं? तो अगर मेरे को बैंकिंग जॉब में जाना है तो किस किस तरह के एग्जाम्स होते हैं? सो देखिए, मेजरली अगर मैं इन सारे एग्जाम्स को कुछ ब्रैकेट्स में डालूं, तो एक आईबीपीएस के एग्जामिनेशन होते हैं। आईबीपीएस क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज। सो आईबीपीएस एक बॉडी है जो बैंकिंग के लिए रिक्रूट करती है। जनरली एक थोड़ा सा लैंग्वेज में बात करें तो एसबीआई के अलावा ज्यादातर जितने बैंक है वो आईबीपीएस के एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट लेते हैं। ठीक है, तो आईबीपीएस के 3 एग्जाम होते हैं, पीओ, क्लर्क एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, आरआरबीज, उनके एग्जाम भी आईबीपीएस कराता है, तो उनके भी 3 एग्जामिनेशन, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिस असिस्टेंट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये आईबीपीएस 6 एग्जाम्स ये कराता है। तो एक आईबीपीएस बैंकिंग के, ओके, सो पीओ, क्लर्क एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एंड आईबीपीएस रीजनल रूरल बैंक एग्जाम्स हो गए। ठीक है, इसके बाद एसबीआई का अपना अलग एग्जाम होता है, तो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई, जैसे मैंने आपको बात करी, आरबीआई के 2 एग्जाम होते हैं, आप ग्रेड बी ऑफिसर लेवल पे जा सकते हो, असिस्टेंट के लेवल पे जा सकते हो, वही हो गया आपको ऑफिसर और क्लर्क के लेवल। ठीक है, इसके अलावा आपका सिडबी के, सेबी के एग्जामिनेशन होते हैं, जो ऑलमोस्ट सेम लाइन पे होते हैं, बैंकिंग वाली लाइन पे। इंश्योरेंस के कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, और कुछ एक बैंक अपने एग्जाम भी करा, जैसे कैनरा बैंक का भी नोटिफिकेशन आया 4-5 दिन पहले, तो वो अपना एग्जाम करा रहा है। ठीक है, सो मेजरली जो हमें प्रिपरेशन करनी है, हमको एसबीआई और आईबीपीएस को ध्यान में रख के करनी है, एंड बाकी एग्जाम्स अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ओके, आई विल आल्सो डिस्कस क्या इनका पैटर्न होता है आईबीपीएस का, एसबीआई का, थोड़ा सा आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट। ओके, मेजरली सिलेबस क्या रहता है? अगर मेरे को बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, बैंक जॉब चाहिए, तो मुझे क्या पढ़ना होगा? सो आई हैव टू स्टडी रीजनिंग, ओके, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आपके क्वेश्चंस हो गए, मैथमेटिक्स अप टिल 10th स्टैंडर्ड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, मोटा मोटा दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू स्टडी। कुछ कहीं पे कुछ आता है, कहीं पे कुछ आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फॉर अ बैंकिंग एग्जामिनेशन, बैंकिंग जॉब एग्जामिनेशन। ये सिर्फ इंडिकेटिव है, ऑब्वियसली पैटर्न में अभी डिस्कस करूंगा एग्जाम वाइज। ठीक है, बैंक टू बैंक सिलेबस डिफर करता है, तो एसबीआई का थोड़ा डिफरेंट है आईबीपीएस से, बट मेजरली यही है, कॉमन यही है ना।
एंड देन जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला एग्जाम जो हमने बात करी थी, आईबीपीएस में भी होता है, एसबीआई में भी होता है, वहां पे जो आप जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहे हो, आईटी फील्ड के लिए जा रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हो, तो उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट अलग से होता है, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट कम्स a lot, to me. So I've been counseling student for banking exam, SSC exams, UPSC exams from past almost 14-15 years now. तो बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे को आता है कि सर बैंकिंग एग्जामिनेशन में मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है जो प्रैक्टिस बेस्ड है मेजरली, तो ये सब कुछ तो मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, 10th तक की मैथ्स आती है, मैंने करी हुई है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे 10th-12th में, है ना, आई हैव स्कोर्ड 90% प्लस, 95 98 आया मेरा, है ना, इंग्लिश मेरी अच्छी है, रीजनिंग प्रैक्टिस कर लूंगा, हो जाएगा। तो व्हाई वुड आई रिक्वायर टू स्टडी दिस कंसेप्ट अगेन? क्या मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए? मैं क्या करूं? मैं डायरेक्टली सीधा मॉक टेस्ट देने लग जाऊं, प्रैक्टिस करने लग जाऊं? शुड आई रिविजिट द कंसेप्ट? शुड आई जॉइन अ कोचिंग? व्हाट शुड आई डू? ओके, सी one thing that you need to understand is that banking exam is a competition. Okay, अभी तक जो भी एग्जाम आपने दिए हैं, जो भी पढ़ाई आपने करी है 10th की 12th की, that was for the exam purpose to score marks. Okay, अब उसमें you have scored 90 or 95 doesn't matter, though both are good marks. Okay, but here if you scored 90 and somebody else is scoring 94 or 91, you may lose your seat to him. Okay, so it's a competition. You have to score 1 marks ahead of your competitor. So that's became the biggest difference out here. The second big difference in banking job exams or any other government job exam and your 10th-12th paper is that the speed matters a lot. यहाँ पर आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था सॉल्व करने का क्वेश्चंस को, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन है जिसको आप 8-10 स्टेप में सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर अगर वो 1 स्टेप में या 2 स्टेप में सॉल्व हो सकता है थ्रू ऑप्शंस, तो वो वाला स्टूडेंट जिसको वो 1-2 स्टेप वाला मेथड आता है, वो ही विल बिकम ahead of you, even if आपको आंसर निकाल दोगे आप. Okay, but if you are taking 1 minute and somebody is taking 20 seconds, he'll get the seat. Okay, so वो faster calculation, faster methods of solving the questions, टाइम लिमिट के फ्रेम में उसको सॉल्व करना, एंड देन कंपटीशन, ये सब कुछ make it so complex that you require to revisit your concept in a different way. Okay, short tricks वो सब आपको सीखना पड़ेगा. So if you feel that you can do that by your own or you have some kind of a mentor at your place, आपके घर में है कोई, तब तो ठीक है. Otherwise I would highly recommend you to join a program, a coaching program. आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम्स बहुत अच्छे आ गए हैं. Okay, उससे क्या होता है that you have a set pattern of what to study first, then what to study afterwards. एक set pattern में आपका पूरा syllabus cover हो जाता है minimum possible time. Okay, so that's about is the preparation required or not. Now, just to give you a little glimpse of dates which are already there. So IBPS clerk exam prelims already 5th से 12th December को scheduled है. Mains उसके बाद Feb में है. SBI PO announce हो गया है ना, अभी उसके फॉर्म्स आए हुए हैं, यू कैन फिल अप द फॉर्म्स. उसका भी मेंस फेब में है. IBPS SO का एग्जाम अनाउंस हो गया है. SBI क्लर्क आने वाला है ना. IBPS RRB भी प्रॉब्ली अनाउंस हो जाएंगे और कुछ महीनों में. Okay, so all the exams now, the notification have started coming up. JEE नीट का एग्जामिनेशन इतना बड़ा एग्जाम करा दिया, UPSC का एग्जाम हो गया, तो अब बाकी सारे एग्जाम्स आने शुरू हो गए. Okay, so this is the time if you really wanted to make a career into banking, आप 2020-2021 के एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो then this is the time that you should gear up, seriously start preparing for the examination. Okay, just to give you a little glimpse of the एग्जाम का क्या क्राइटेरिया, क्या पैटर्न होता है डिफरेंट एग्जामिनेशन में. तो सबसे पहले एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारी एज लिमिट क्या है. सो ज्यादातर एग्जामिनेशन में इफ यू आर बिटवीन 20 to 30 इयर्स ऑफ एज, यू कैन गिव मोस्ट ऑफ दीज एग्जामिनेशन. ओके, सो 20 से 30 के बीच में, कुछ एग्जाम्स में 28 है. ओके, बट मेजरली 20 से 30 के बीच में मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉल्स. ओके, सो इफ योर एज इज बिटवीन 20 to 30, you are good to go. You can just check out probably once with the notification, कहीं पे 28 है और आप अगर 28 प्लस है तो फिर आप वो एग्जाम नहीं दे सकते. But between 20 to 30 most of the examination you can give. Okay, graduation is the minimum requirement for all these examinations, so you have to be a graduate. Okay, final year appearing आप दे सकते हो एग्जाम्स को.
एंड मेजरली पैटर्न क्या होता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, कहीं पे इंटरव्यू होता है, थर्ड स्टेज होती है या नहीं होती है, बट प्रीलिम्स मेंस हर जगह होता है. ओके, सो दैट्स व्हाट द पैटर्न इज, एग्जाम पैटर्न जो आपका होता है. Now just understand what is prelims, what is mains. Okay, so what I have done is जिन जिन का common है उसके हिसाब से I have made the exam pattern. So for example SBI clerk, SBI PO, IBPS clerk and IBPS PO, इन चारों एग्जाम्स का जो prelims है उसका पैटर्न सिमिलर है. क्वेश्चंस का पूछने का तरीका उनका स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाता है. ओके, सो ऑब्वियसली आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में थोड़े इजियर क्वेश्चन आते हैं, एसबीआई पीओ आईबीपीएस में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट जो पैटर्न है एग्जाम का वो सेम रहता है. तो तीनों में इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये 3 सेक्शन आते हैं प्रीलिम्स में, चारों में. ठीक है, तो वेदर इट इज एन एसबीआई एग्जाम और एन आईबीपीएस एग्जाम, पीओ और क्लर्क में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आती है आपकी. रीजनिंग और मैथ्स 35 मार्क्स की आती है और इंग्लिश 30 मार्क्स की आती है. टोटल 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, सो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 35 क्वेश्चंस क्वांट और रीजनिंग के. टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 आवर का पेपर होता है, हर सेक्शन में 20 मिनट्स मिलते हैं और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है. ओके, जस्ट अ मोमेंट. ओके ओके, सो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स में हमारे 3 सेक्शन हो गए, तीनों सेक्शन को 20 मिनट्स मिलेंगे. इंग्लिश में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वांट और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स. ओके, नाउ आईबीपीएस आरआरबी जो एग्जाम होता है रीजनल रूरल बैंक्स का, उनका जो प्रीलिम्स का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. वहां पे इंग्लिश नहीं आती प्रीलिम्स में, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आती है 40 मार्क्स की. ओके, टोटल 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग. यहाँ पे 45 मिनट्स होते हैं, 1 आवर की जगह 45 मिनट्स हो जाते हैं, बट इंग्लिश का सेक्शन हटा दिया. ठीक है, अब आ जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन पे. सो मेंस एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का सेम होता है, सिमिलर पैटर्न पे होता है. तो वो आपके सामने है. तो आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है और डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन, DADI, ठीक है, ये आपका ऐड हो जाता है. तो यहाँ पे आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 155 क्वेश्चंस होते हैं. हर सेक्शन में डिफरेंट टाइम पीरियड और मार्क्स अलॉटेड होते हैं. तो फॉर एग्जांपल आपका रीजनिंग का 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 60 मिनट्स. ओके, सो इस तरह से हर सेक्शन का आपको सामने आपकी स्लाइड है, आप देख सकते हैं एक बार. सो जब ये मेंस एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद एक इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, जहां पे आपको कंप्यूटर पे टाइप करके लिखना होता है एक लेटर और एक ऐसे. ओके, सो लेटर राइटिंग ऐसे का 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक लेटर पे क्वेश्चन होता है और एक ऐसे पे क्वेश्चन होता है. ये 50 मार्क्स का होता है एसबीआई में, और आईबीपीएस में 25 मार्क्स का होता है. दोनों में 30 मिनट्स मिलते हैं इसके आपको. तो टोटल 3 आवर्स 30 मिनट्स का मेंस होता है. 30 आवर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीजनिंग, कंप्यूटर, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो 30 मिनट्स का बाद में होता है. ओके, सो ये हो गया आपका आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का पैटर्न. आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का मेंस पैटर्न बिल्कुल लाइंस पे होता है. तो यहाँ पे क्या होता है आपका, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता जो हमने पीओ में देखा था लास्ट में इंग्लिश का. बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न होता है. तो आपका रीजनिंग कंप्यूटर्स का एक सेक्शन, क्वांट यानी मैथमेटिक्स का एक सेक्शन, इंग्लिश का एक सेक्शन और जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन. ओके, टोटल आपके 45 मिनट्स मिलते हैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए, और 35 मिनट्स मिलते हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए. ओके, आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 190 क्वेश्चंस होते हैं और 160 मिनट्स, सो 20 मिनट्स लेस देन योर 3 आवर्स. ओके, तो इतने आपका टाइम अलॉटेड होता है टोटल. ओके, सो दैट्स अबाउट योर क्लर्क एग्जामिनेशन, वेदर एसबीआई आईबीपीएस. देखिए फर्क क्या हो जाता है एसबीआई और आईबीपीएस के पेपर में, दैट आईबीपीएस के क्वेश्चंस थोड़ा सा लिटिल लेस कॉम्प्लेक्स देन एसबीआई के क्वेश्चन. एसबीआई का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है आईबीपीएस से, बाकी अदरवाइज थोड़ा सा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पूछने का डिफरेंस है, और कुछ नहीं. बाकी सेम प्रिपरेशन करनी है हमको, वेदर इट इज आईबीपीएस पेपर और एसबीआई पेपर. बस मॉक्स में हमारा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में. अब जो आईबीपीएस आरआरबी हमने देखा था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जहां पर मैथ्स और रीजनिंग का सिर्फ सेक्शन था, इंग्लिश नहीं था, उसका मेंस एग्जामिनेशन का देख लीजिए एक बार पैटर्न. तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाता है ना, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपने ऑप्ट किया. 2 पेपर 2 लैंग्वेज होती है यहाँ पे, या तो इंग्लिश या हिंदी फॉर्म में आपको फिल करना होता है स्टार्टिंग में.
तो एक रीजनिंग का सेक्शन होता है, मैथ सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस का होता है, जो भी लैंग्वेज आपने ऑप्ट करी है इंग्लिश या हिंदी उसका होता है, एंड कंप्यूटर्स का पेपर होता है. ओके, सो बेसिकली 2 घंटे में 2 आवर्स में दिल बी 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स. दिस इज आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, इनका मेंस का पेपर. ओके, अब जस्ट टू गिव यू अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ सिलेबस, मैंने बताया आपको मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, बट उसमें टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, तो सो दैट आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो कि क्या चीज पूछी जाती है. ओके, सो वो आपके सामने यहाँ पे लिस्टेड है, सो यू कैन जस्ट चेक आउट. सो रीजनिंग में किस किस चीज पे क्वेश्चंस आते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रैंकिंग डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स. ओके, आपका डेटा सफिशिएंसी की डेटा सफिशिएंट है या नहीं है कैलकुलेट करने के लिए आंसर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, टेबल बेस्ड सिलोजिज्म आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में आते हैं. मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आ सकता है, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क. ओके, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, जो भी आपके मैथ्स के 6 से लेकर 10 तक के टॉपिक्स थे उन सब पे क्वेश्चंस आते हैं. इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश के सेक्शन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, जहाँ पे एक पैसेज आपको दिया, उस पैसेज के बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चंस के. पैरा जंबल्स आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, पैराग्राफ कंप्लीट करने के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट पे बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं. तो ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आपके आ जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब कंप्यूटर का मैंने बताया था एक पेपर होता है मेंस एग्जाम में. ओके, तो जो कंप्यूटर में आपका बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाएगा, इंटरनेट नेटवर्किंग आ जाएगा, है ना, बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बिकॉज इन सब से आपको डील करना होगा जब आप काम करोगे तो, है ना. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ डेटाबेस, सो बेसिक बेसिक चीजें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आनी चाहिए. ओके, और जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा वो कंप्लीटली आपका करंट अफेयर्स बेस्ड होगा, जो भी हो रहा है आजकल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो उसके लिए आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम पढ़ना होगा, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है इंडिया को, उसके बारे में ओवरव्यू जानना होगा ताकि आप आंसर्स लिख पाए. ठीक है, अभी रिसेंटली जो क्रेडिट पॉलिसी चल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ है, उन सब के बारे में पढ़ना होगा, कोई गवर्नमेंट स्कीम आई है बैंकिंग से रिलेटेड, वो आपको पढ़ना होगा. तो ये सारी चीजें आपकी जनरल अवेयरनेस के अंदर आ जाएंगी. प्लस हमें जो भी इंडियन एंड फॉरेन बॉडीज हैं, सिडबी हो गया, सेबी हो गया, आईआरडी हो गया, फॉरेन बॉडीज हो गई, मतलब जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएन हो गया, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. अब नाउ दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरह का बैंकिंग सेक्टर होता है, एक बेसिक्स मैंने आपको बता दिया. एक लास्ट चीज दैट आई वांटेड टू डिस्कस एंड देन आई विल गो टू क्वेश्चंस. जो मेन चीज है, देखो बैंकिंग का जो बैंक जो वर्ड है, इसी में सारा का सारा आपका प्रिपरेशन का तरीका, यू नो, द पैटर्न ऑफ द प्रिपरेशन इज देयर इनटू दिस वर्ड ओनली, बैंक. ओके, फर्स्ट इज दैट यू नीड टू कवर अप द बेसिक्स. आपको क्या करना है, देखिए मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, आपको सबसे पहले कंसेप्ट्स अपने रिवाइज करने हैं, क्योंकि काफी चीजें आपने ऑलरेडी यू हैव डन इट into your 6th 7th 8th 9th 10th. Okay, so you just need to revisit your basics first, concepts, formulas आपको रिवाइज करने हैं. After that you need to start understanding how to apply them. So यहाँ पे difference क्या हो जाएगा बैंक एग्जाम में, that your application that you have learned in your 9th class 10th class 7th class, वो यहाँ पे work नहीं करेगी. You have to understand the new application, कैसे कम से कम टाइम में you can solve the questions, वो application यहाँ पे आपको सीखनी होगी. Then comes your nurturing. अब आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने होंगे. तो जिस टाइम पे आप एप्लीकेशन सीख रहे हो, मैंने ये सीखा कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, तो फिर मैं अपने आप को नर्चर करूंगा, उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उस पर्टिकुलर डे में, सो दैट वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में फिट हो जाए, वो एप्लीकेशन मेरे दिमाग में फिट हो जाए. एंड लास्ट इज योर किक ऑफ. किक ऑफ मीन्स बहुत सारे मैं रियल टाइम मॉक्स अटेम्प्ट करूंगा, जो कि एग्जाम के पैटर्न पे होंगे, एक्चुअल एग्जाम जैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ. उससे क्या होगा, आई विल गेट रेडी, मैच रेडी. जैसे आप देखते होंगे अगर कोई इंडिया की क्रिकेट टीम है, वंस दे हैव टू अपीयर इनटू अ मैच, उससे पहले वो मैच प्रैक्टिस करते हैं, तो एक्चुअल मैच सिनेरियो को कंस्ट्रक्ट करके मैच खेलते हैं आपस में ही. ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ. बस ये 4 चीजें कर ली, आपका बैंकिंग की प्रिपरेशन होगी. ओके, सो बेसिक्स, एप्लीकेशन, नर्चरिंग एंड किक ऑफ. ओके, हम लोग
बहुत सारे हमारे चैनल्स हैं, मतलब बेसिकली जहां पर हम लोग इस तरह के सेशंस भी करते रहते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग, नोट्स हम लोग स्टूडेंट्स को एक्सेस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप टेलीग्राम पे अगर हो, अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन है विच इज जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप, टेलीग्राम की एप्लीकेशन होती है, वो अगर आपके पास है तो आप टेलीग्राम में सीएल गवर्नमेंट जॉब सर्च करके देखना। ओके, सीएल गवर्नमेंट जॉब, तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, क्विज आपको वहां पे मिल जाएंगे डेली के, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्लस इस तरह के सेशन आप और अगर अटेंड करना चाहते हैं जहां पे आपको एसएससी एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे, आरबीआई ग्रेड बी के बारे में बताएंगे, मैथ्स कैसे सॉल्व करनी है, क्वांट में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, तो ऐसे फ्री सेशंस हम करते रहते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल है हमारा सीएल गवर्नमेंट जॉब के नाम से, यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, उसको आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको पता लगता रहेगा उसके बारे में। ओके, इन केस अगर इफ यू आर स्टार्टिंग योर बैंकिंग प्रिपरेशन, या आपको आपने स्टार्ट करी है बट डिफिकल्टी हो रही है बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन में या एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में, सो वी रन अ सेट ऑफ कोर्स व्हिच आर कॉल्ड मास्टर कोर्स। ओके, ये बेसिकली किस तरह के कोर्सेज हैं, ये एक्सक्लूसिव कोर्स हैं जहां पे एक कोर्स ज्वाइन करके आप सारे डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स कवर कर सकते हो एक ही बार। ओके, सो जैसे वन इज कॉल्ड बैंकिंग मास्टर कोर्स। ओके, जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं अबाउट करियर लॉन्चर। हो सकता है आपने नाम सुना हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। तो करियर लॉन्चर एक 25 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका जो स्पेशलाइजेशन है वो एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराना है। एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम कौन से होते हैं? जिनमें मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश, ये सब आता है। ठीक है, तो हम लोग 25 साल से वी आर दी biggest name right now. Okay, by far there is no one which is nearer to us in terms of aptitude coaching. Okay, so 25 years का legacy है, एक इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है। we have 200 plus branches across India. Now we came up with these online classes almost 6 years back. Okay, so हम लोग 6 साल से ये ऑनलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं। These are as good as your normal, जैसे आप अभी मेरे से बात कर पा रहे हैं, मैं अभी आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, उस तरह से बिल्कुल एकदम इंटरैक्टिव क्लासेस चलेंगी। तो इस तरह का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं करियर लॉन्चर बैंकिंग मास्टर कोर्स, या लिंक आपको यहाँ पे भी चैट विंडो में आ जाएंगे। एसएससी के लिए एसएससी मास्टर कोर्स है, बैंक प्लस एसएससी अगर आपको टोटल प्रिपरेशन करनी है तो बैंक प्लस एसएससी मास्टर कोर्स आ जाएगा। अगर आपको खाली कुछ सिंगल सब्जेक्ट्स मैथ्स, इंग्लिश खाली वो करना है तो वो भी अवेलेबल है ऑप्शंस। ओके, एंड जो प्राइसिंग है वो बहुत ही आपको डिसेंट मिलेगी। ओके, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कोर्सेज हम लोग रन करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत हाई होता है, तो वी कैन चार्ज अ लिटिल लेसर अमाउंट। तो आपको 5000 bucks और 6000 रुपीज में आपको पूरा का पूरा बैंकिंग, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगी। Okay, which includes the test series also. Okay, so that's about the courses that we have. You in case अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कॉल करके आपको डेमो क्लासेस शेयर करें, या आपके व्हाट्सएप पे डेमो क्लासेस आ जाएं, या आप काउंसलिंग चाहते हैं हमसे, तो आप चैट विंडो में अपना नंबर मेरे को शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम हिमांशु त्यागी है, तो ड्रॉप डाउन पे हिमांशु त्यागी सेलेक्ट करके आप अपना नंबर मेरे पास सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको कॉल बैक अरेंज करा दूंगा हमारी टीम से। ऑल्सो जितने भी स्टूडेंट अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम ऑन करी है। तो 50% का ऑफ है सारे कोर्सेज पे आज के लिए। ठीक है, तो अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज के लिए 50% ऑफ है। ठीक है, आप लिंक अभी चैट विंडो में चंदन सर ने डाला है, तो आप इन लिंक्स पे जाके आप वहां पे कूपन कोड होगा शायद कोई फ्लैट 50 के नाम से, फ्लैट 50 कूपन कोड रन करके आज रात 12 बजे तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी प्राइसिंग आपको दिख रहा है उसमें 50% ऑफ हो जाएगा। बट ये सिर्फ जिन्होंने ज्वाइन किया सेशन उन्हीं के लिए है कम्युनिकेशन, और आज 12 बजे तक। ओके, इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ज्वाइन करने में, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो अभी एक नंबर आपको फ्लैश हो जाएगा चैट विंडो पे, आप उस नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, आप अपना नंबर हमें छोड़ सकते हैं। Okay, so that's all about what we wanted to discuss. Abhi I'll just take your questions. So I'll just go to the chat window and
सो चंदन सर ने अपना नंबर यहाँ पे फ्लैश कर दिया है। आप ये नंबर 9582186368 इस नंबर पे कनेक्ट करके आपको कुछ भी पूछना है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी बात जाननी है, 50% में कैसे ज्वाइन करें, क्या क्या आपको डिलीवरेबल्स होंगे, आप सब कुछ पता कर सकते हैं। ओके, नाउ आई जस्ट चेक आउट आपके क्वेश्चंस एंड देन प्रॉब्ली शुभम इज आस्किंग हाउ टू क्रैक क्वांट सेक्शन। सो शुभम, हम थोड़ा सा अभी सेक्शन वाइज इस सेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि जनरल सेशन रखा हुआ है, बट आप हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, आप चेक कर सकते हो मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में हमारी साइट पे जाके, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वो इट्स लाइक उसमें इसी तरह के सेशंस रहते हैं कि किस तरह से क्वांट, रीजनिंग, मैथ्स किस तरह से डील करें, या आप हमारे यूट्यूब पे भी जाके उन सेशंस को चेक कर सकते हो। ओके, just a moment. Swapnil is asking what is the career growth in banking sectors. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, career growth आप चेयरमैन तक पहुंच सकते हो। वर्क ऑफ पीओ इन अ बैंक, सो पीओ देखिए हर फील्ड में काम करता है। आप टेलिंग में भी काम करोगे, आप डॉक्यूमेंटेशन में भी काम करोगे, आप अकाउंटिंग में भी काम करोगे, आप हर तरह के वर्क करोगे, एंड देन बेस्ड ऑन योर वर्क, ऑन योर परफॉर्मेंस, दे विल गिव यू सम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टू वर्क विद आफ्टर योर कंफर्मेशन। ओके, अक्षय इज आस्किंग आरआरबी पीओ एंड क्लर्क सैलरी, तो थोड़ा सा लेस सैलरी मिलता है रीजनल रूरल बैंक्स में। ओके, क्योंकि आप रीजनल लेवल पे रूरल पोस्टिंग आपकी होती है, तो थोड़ा सा कम सैलरी होता है पीओ और क्लर्क से, जो आईबीपीएस या एसबीआई के अकॉर्डिंगली। ओके, which is better? Vranda is asking which is better, RBI Grade B or IBPS PO? Anytime RBI Grade B officer is much bigger than a PO post, whether it is IBPS PO or SBI PO. So RBI Grade B, that is why examination ज्यादा tough complex होता है, और RBI Grade B में बहुत सारी conditions भी हैं। आपका 60% होना चाहिए 10th 12th and graduation में to give RBI Grade B examination. Okay, eligibility वहां पे है। SBI स्केल 1 मींस वो पीओ की जॉब होती है, उसको स्केल 1 ऑफिसर बोलते हैं। ओके, हाउ टू गेट दिस जॉब? SBI पीओ एग्जाम के थ्रू। करामसी कौशल्य, हाय सर, फॉर फ्रेशर्स गिव सम सजेशंस। तो ऑलरेडी कुछ सजेशंस मैंने आपको दे दिए किस तरह से यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, Shreya is asking, sir, can we do internship in bank before graduation? I'm not sure. You need to check out with the banking. Some private banks may allow, but I don't think so. Before graduation, they may allow you. Okay. Swapnil is asking how to prepare for bank mains. I have already shared the courses, so you can probably check out different courses that we have. We also have courses specifically for SBI exam or IBPS exam. So आप किसी particular exam की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके courses भी available हैं. Akshay is saying, sir, I'm graduate in 2021. Should I be applicable? So Akshay, आप अगर if you are final year appearing, you can give the examination. You can check out the notification for a little better detail, because COVID की वजह से some examination have been delayed, so they may have changed some conditions. So you can check out the actual notification of the exam right now. Akshay is asking how much duration was perfect for preparation of banking exam. Roughly 2.5 to 3 months you require to prepare for banking examination. In some condition, if you are kind of a person who takes time to cover your concept, so 4 to 5 months भी लग जाते हैं, but that's good enough. 5 months are more than enough. Vrinda, it will be a 1-year program. Okay, so the kind of, you can say, they're applicable till 1 year, so you'll get the access for 1 year. Okay. Ramya is asking which is the best coaching center. I will always say Career Launcher. Okay, just check out the programs. You'll be amazed to see the kind of quality that we have, because we are 25-year-olds into Aptitude. All the best and the biggest trainers across country are currently working with us. Okay, so in Aptitude section there is no one which is nearer to us. Our faculties are like the best right now. Okay, so you can just go through the classes once, and so Varun, I have received your number. I'll arrange a call back to you. Okay, just a moment. I'll just forward your number to my team so that there'll not be any confusion. Okay, Shubham is asking how to crack the quant section. I'm not good in this. So Shubham, I've already told you, you can probably check out our YouTube channel. So we have covered this particular query in a session where how you can go about the quant sections. Okay.
What about Varun is asking, what about CL's offline programs? So we also conduct few offline programs, but because of current situation, we are not very keen on offline program, at least for next 3 to 4 months. Okay, until unless we don't have a vaccine in our hand. So I would highly recommend right now an online program. Okay, because it's safer way of doing the classes, and then it's very easier also, and you can attend the classes as per your convenience here. You will also get a recording of each and every class. Okay. Vrinda is saying, doing a post graduation related to banking, will it help? Yes, obviously it will give you an advantage. Shubham is asking, join as a IBPS marketing officer, career growth. There is, it's same as IBPS PO. You will also can get to, the topmost position. You have a little more advantage because marketing officer is a little higher position than a probationary officer. Okay, so you'll start ahead of a PO. Sridhar is asking, I am in BCom first semester. Can I apply now? No, Sridhar, you have to wait till you come into BCom last semester, then you can apply. Swapnil is asking, sir, specialist officer IT or SBI PO, which is better? Specialist officer IT is better. Okay. Guncha is asking difference between PO clerk and specialist officer in terms of work. So clerical level, you'll be more into documentation and on a low level jobs. PO, you will be exposed to each and every department of a banking sector, and you will be posted as an officer. Specialist officer, you will be working on a particular field. Your choice of field, marketing, IT, and you will start a little ahead of any other. Okay. Swapnil is asking, specialist officer IT, only engineers can apply. We have to check. I'm also not very sure that I believe an MCA plus any BTech can apply into that. Okay. Akshay is asking, what was 11th bipartite settlement in banks now in the salary increase from now onwards in bank employees? That is something, very specific. I won't be answering that. I'm sorry. I don't have much, right now. I have to check what you're asking exactly out here. Maybe one of my banking faculty, who is taking banking sessions, they can answer general awareness banking. Okay. I'll try Akshay to, send you an emailer with the answer. Okay. Sridhar, which course is better, means PO or BO? I don't understand what you are asking. Okay. Neha is saying, why the age is up to 30 years only? See, Neha, you need to understand. So once you get into a banking PO job or clerk job, you require a lot of years to understand the banking system so that you will, you will be able to work properly. Okay. So if you start at an age which is like 35, 40, and once you start understanding things, there'll be time when you comes nearer to your retirement, or you'll not be able to grow much into the banking system. Okay, so they wanted some younger people to come into the system. Okay. Shriram is saying, sir, from next year they're planning for common entrance test, so it will be very tough comparing to 9. Okay, so they are planning a CET. Okay, what government is planning, that there are too many tests which are happening right now for government exams. So they wanted to have a common entrance test at least for prelims. Okay, so that's where the CET come into picture. Most probably next year or next to next year it will come into play. For now, SSC, IBPS, and RRB are part of it. So there'll be one examination for them. So is it going to be tough? I'm not sure, because once we'll have the pattern and the syllabus, then only we can comment about it. But you can say that it will become kind of less complex for any banking or any government job aspirant, because now you'll not have to prepare for different types of tests. You'll have one common test, so it will kind of become easier for you, because you can just focus on your energy onto one examination. Okay. Abhishek is saying, sir, is there any compulsory certifications for Band 9A? Typing certification is not required, don't worry. There'll be a typing test, that's enough. Ramya is saying, any new batches was started? Yeah, so we have just started SBI batch. There are a few more batches which are starting, so you can check out on our website, or you can connect to Chandan sir. The number is there on the chat window.
Sridhar is saying, sir, can you please suggest for beginning with preparation right now? I don't understand your question, Sridhar. If you can just frame it again. Abhishek is saying, sir, is there any compulsory? Okay, I've just answered that. Okay, Akshay, I have your email ID because when you logged in, so we got the email ID. Okay, Telegram group name, Shreya, is CL Government Job. Okay, you can just search for CL Government Job. Sir, which post is for engineers in the banks? You can opt for any. You can go for a PO exam. You can go for a specialist officer if you're interested for that. Okay, CET I have already explained to you. When will CET start? Neha, nobody knows. Okay, so they've just constituted a body. Okay, so they're working on the modalities right now. So you'll probably be hearing next year, somewhat March, April time duration. Okay, you'll be hearing about some description of how it will gonna be or when it will gonna be. Sridhar, I decided to start the preparation of banking exam. Great, all the best. You can probably check out our website and go through a few of our courses. Okay. So if you need some suggestions, Sridhar, you can just connect with Chandan sir at 95821-86368. The number is there in the chat window. You can just note down the number and call him. He'll give you guidance. Okay, whatever your queries. Is IBPS SO applications for December 20 open right now? I believe they have already opened the application. Chandan can put a light onto it, but I believe they have already announced the vacancies. Okay, so you can just go through it. Okay, I hope I've answered all the queries. If you have any feedback about the session, anything you wanted to say, good or bad about the session, you're most welcome. Okay, so you can probably give me a feedback. You can just share what's your thought about the session. If you have any other query, you can share that. I'll answer that. I hope I have answered all the queries. I'm just checking out. Okay, Vranda is saying, sir, I want to apply for the year 21. But what if CET is launched in between? Okay, see, even if they launch the CET, they'll give you, a preparation time. They'll give you a lot of time once they announce the CET and between the examination. Don't worry about that. So if it happens, it will happen for each and every one of us. Okay, so all will be in the same boat. Okay, so don't worry about all that thing which is not in your hand. Okay, so right now we should prepare with whatever we have currently, what we know currently. Okay, so right now we have to prepare with the current pattern in mind. Once the CET will be announced, we'll prepare according to that at that particular time. Mostly 90% of the thing we have already covered into the current pattern. Okay, so it will not be you required to prepare again for CET. What we need to do most probably is that based on the CET pattern, we have to do a lot of mocks related to that. Okay, so you should start your preparation right away. Do not wait for CET announcement, because it may not come for next 6 months or 8 months, and you'll be losing your precious time. Okay. Okay, in case of any other query, please put in onto the chat window. Any kind of feedback is most welcome. So you can just put in if you like the session or dislike the session or anything about the session. That will be great. Okay. I'll wait for next 2 minutes for any other query that you may have. I'll also check out on the YouTube session if there is any query that student have asked and I've missed. Guncha is saying, do we require any prior work ex? No. For specialist officer, the work ex requirement is not there. Okay, there are some qualification requirement which you can check out from the notification. You're most welcome, Guncha. Okay, great. Okay, so thank you so much for attending the session, and all the very best.
Vrinda is saying thank you so much, sir, for the great session. You're most welcome. Shubham says thank you, sir. You're most welcome, Shubham and Vrinda. Uh, any other feedback, Neha? Thank you, sir. You're most welcome. Okay, Sridhar is saying thank you very much, sir. You're most welcome. Okay, so it feels good to know that I have done. Okay, great. Okay, Swapnil is saying thank you, sir. Ramesh is saying thank you, sir. Okay, great. Good to know your feedbacks, and so we'll come again. We'll come back with some other sessions like this, and we'll make sure that we'll keep on getting notification about these sessions. Okay, what you can also do, you can go to, as I've told you, you can go to our YouTube channel, where you'll get all the notifications about the sessions. Okay, so that's all about today. All the very best for whatever examination that you are preparing. All the best, and just do good. Take care. Take care of your health. Bye.